Hello everyone. बहुत ही भल अच्छी, बहुत ही भल अच्छी. Thank you for asking. Anyway, so hello everyone. I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Okay, tell me how are you all? तमाने सब केमिति अच्छा? क्लास स्टार्ट करिबा. आज आपनकर काली मु 100 नंबर क्वेश्चन बनैथिली तो 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी करि सारी छे हैला. केक रखिछि गायत्री, केक अछि तम बाय फ्रीज रे रखिछि. तो आज जो 50 क्वेश्चंस आउ लेफ्ट रही जाइथिला ताकू हमें करिबा. नाड मीन सर. अच्छा ओके स्टार्ट करिबा. टिके पिलांगो कनेक्ट करि दियो. क्लास टिके जल्दी जल्दी करिबा. प्रणाम प्रणाम. जल्दी जल्दी टिके कनेक्ट हबो जति हमें टिके जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करिबा. 2 मिनिट वेट करिबा. पिला आसी गले हमें स्टार्ट करिबा. ता पूर्व टिके प्रमोशन कर देथिया. तो तम माने जेमति जानि छ कि 3499 रहूची आपनकर बैच प्राइस. एंड ए बैच ता आपण मानकर कोन ना 1.5 ईयर वैलिडिटी रहूची, जहा अंडर रे कि आपण मानकर स्टेट गवर्नमेंट रो सब एग्जाम कवर अप हे जाउची. नो मैटर आपण मानको स्पेसिफिक बैच नागु पडिबनी. सीजीएल हो या फिर आपनकर सीजीएल हो या फिर आपनकर पीओ हो या फिर नहीं ये तो आपनकर अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग एग्जामिनेशन इज डिफरेंट. या सहित महापैक रे जीवनी. बट आपनकर पीओ हैला, सीजीएल हैला, अपकमिंग आपनकर आरआई जेंति सरी गला आगु को जदी आपनकर एसआई एग्जामिनेशन ओके आसुची जानचंती आपण माने. एसआई एग्जामिनेशन जदी भी हैला ताले एटा भी आपण माने अंडर रे आसिला. देन जेईए हैला, डब्ल्यूईओ हैला. ओके सो जत्ते आपनकर ओपीएससी, ओडब्ल्यूएससी लाइक हाई कोर्ट एसओ, सेक्रेटेरिएट एसओ तो सब आपनकर या अंडर रे आसी जिवो. तो जो माने भी बैच लेवा पई चाहूचो देन आई विल सजेस्ट टू टेक द बैच महापैक. ओके चलो ऑलरेडी तो माने जानि छ. एंड एक्स्ट्रा जदी आपण माने सीजीएल पई किछि स्पेसिफिक बैच चाहूचंती ओनली टू प्रिपेयर फॉर द सीजीएल एग्जामिनेशन देन यू कैन टेक द 1199 प्राइस हैला. हां जदी आपण माने एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहूचंती, जदी आपण माने बिना डिस्काउंट रे नै परिबे तो बहुत भलो कथा. बट जदी 10% डिस्काउंट चाहूचंती देन आपण माने एके 10 और एसआर 10 भी यूज करि पारिबे. ठंडा लागुनी फैन देइची, एसी भी चलेबी, गरम लागुची. आसो तो प्रभा 2.0 अपन माने स्पेसिफिकली नै परिबे. तो प्राइस इज 999, वैलिडिटी 1 ईयर. एंड एसएसपी टीजीटी रे अपन माने जदी आर्ट्स नउचंती, पीसीएम नउचंती, एफईसीपी सेट नउचंती, नो मैटर वैलिडिटी 1 ईयर रहिबो. प्राइस रहिबो 1499. एंड किछि भी क्वेरीज अछि कांटेक्ट नंबर एठी मेंशन हेछि, ताको कांटेक्ट करंतु एंड जस्ट सॉल्व योर क्वेरी हैला. जोरे ठंडा पड़ी छै. ठंडा तो बिल्कुल लागुनी. मु तो एसी टा ऑन करिवि. आसो तो ऑलरेडी कालीटा तमनु कहिथिली. आज टिके लैक ऑफ टाइम पई तमनकर एटा मु सेट करि पान न्यू. बट स्टिल आउथर कहू द ओनली पर्सन हु इज एजुकेटेड is the one who has learned how to learn and sense. तो तमन को एजुकेट केही करै परिबे नाही unless you तमे माने चाहिनो. ओके सेति पई निज अकॉर्डिंग ही जिवो. तो फर्स्ट क्वेश्चन मते कहि दियो आजि रो जोटा कि 50 काली ओवर ऑफ करिथिले. एंड आजि आउ 50 क्वेश्चंस हमें करिबा हैला. को स्टेट रे अछंती हम आपण मु एबे फिलहाल वर्तमान तो मु स्टैटिक रे नाही माने मोशन कंडीशन मोशन स्टेट रे अछि. नॉट इन ए स्टैटिक. द स्टेट इज मोशन. आसो तो मते कुआ दैट इज द ताला कावेरी. नाटा कहिथिली ताला कावेरी रो कावेरी को रिलेट करथलो ह ना नाही. तो ताला कावेरी द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द कावेरी रिवर लाइज इन ये कोठी आपण को रहूची क्विकली कुआ. केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. व्हाट विल बी द राइट आंसर क्विक. कर्नाटका पक्का. good evening. Okay asa. So the Tala Kaveri, the origin point of the Kaveri river is located in the Karnataka state. It lies on the Brahmagiri range in the Coorg district of the Karnataka.
which is in the western Ghat. Okay, चलो next मते कहबो the Mahanadi river originates from which of the following regions कथा एठी पचारिला जदि regions कथा कहबो जल्दी कोन हबो अमरकंटक हिल ना सिहावा हिल और राजमहल एंड मैकाल को तो तमाने कंफ्यूज होबो तमाने कंफ्यूज दीटा करे सो राइट आंसर कोन हबो ना सिहावा हिल चलो नेक्स्ट so the Mahanadi river originates from the सिहावा हिल of कोठू झारखंड ना छत्तीसगढ़ कोठू ओरिजिन हेची मते कहला झारखंड ना छत्तीसगढ़ एथि भी पिला माने बहुत कंफ्यूज होती मते को झारखंड ओरिजिन हेची ना छत्तीसगढ़ ओरिजिन हेची क्विक कोठू ओरिजिन हेची छत्तीसगढ़ वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते कहबो the Fena river primarily flows in which direction the Fena river आपनकर को डायरेक्शन रे फ्लो करे that is primarily flows in which direction quick B okay चलो that is the westward and towards Arabian Sea or the eastward towards the Bay of Bengal the Pennar को आपण माने कोठी ना ऑप्शन बी को चूज करचंदी ईस्टवर्ड ताको लॉक किया गला एंड आपण मानकू एथिरे 10000 टंका धन राशि प्राप्त करा गला आपण मानकू गोटे 10000 मु दउ छला 10000 पॉइंट आपण ले 1 लाख पॉइंट जहार हेसिबो देन से मानकू गोटे थाई प्लेटर मिलियो हला आसा सर सर हेलो सर ओके सर आपण भी प्रिपेयर करंतु नो वरीज आपण प्लीज आपण प्रिपेयर करंतु ओके आसा so the Fena river primarily flows eastward towards the Bay of Bengal it originates in the Karnataka and flows through the Andhra Pradesh before draining into the Bay of Bengal clear कोठी आपनकर Bay of Bengal so दा सिगी से माउथ ओपन करिछि ना नियर द आंध्र प्रदेश हमें क्लियर चला नेक्स्ट में देखो the Sri Sailam dam is famous for which of the following Sri Sailam dam कहिले आपण माने जानि संती प्रेजेंट इन द आंध्र प्रदेश बट क्वेश्चन का पचाछि ना एटा कोठी अछि ता फॉलोइंग द इंडियाज टॉलेस्ट डैम हमें ताकू कहूचे इंडिया रो डीपेस्ट रिजर्वोयर कहूचे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन ऑन द कृष्णा एटा कहूचे और द ओल्डेस्ट डैम इन साउथ इंडिया व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी वेरी गुड चलो the Sri Sailam dam is built on the Krishna river in the Andhra Pradesh and thus we can say that it is known as known for its hydroelectric power generation capacity that making the second largest hydroelectric station in the Krishna river clear ताहले फास्ट आपण माने कृष्णा रिवर कोटा को कहिबे फास्ट आपण माने कोटा को कहिबे दामोदर ना तो दामोदर तो एथिरे नादी दामोदर तो आपनकर कृष्णा रा भौणी नर्मदा रे अछंती तो कृष्णा कहिले कोटा माने रखुचो नागार्जुन yes चलो next में देखो the Nandi Hills the source of the Pennar river belongs to which physiographic division quick good evening quick जल्दी को टिके मते को the Nandi Hills the source of the Pennar river belongs to which physiographic division what will be the right answer here the Eastern Ghat Western Ghat Deccan Plateau or the Himalayan foothills कोटा हवा right answer कहो जल्दी को what will be the right answer quick Western Ghat समस्तकर गोटी आंसर बी सी भीतर बहुत भयंकर कंफ्यूज होछ ना कि हो आसो तो बी एन हो कि सी हो कौन हबा राइट आंसर ना Deccan Plateau physiographic division रे as they are an upland region situated within the large plateau हमें ताकू कोठी ना Deccan Plateau को जगह रे ना Deccan Plateau रे ताकू हमें ऑब्जर्व करि परिबा कौन रे एमती आंसर दोउछ कहार भी ठीक होनी कहार भी गोटे तुक्का बाजुनी हां आसो Next question मते को the Bhakranangal dam lies on the border of which two region को region ने आपन कर अछि मते को the Bhakranangal dam lies on the border of which two regions quick the Punjab Haryana Punjab Himachal Pradesh and आपन कर अछि Himachal Pradesh and Uttarakhand रू कहि जाउछो आंसर दियो ऑप्शन बी वेरी गुड
So the Bhakra Nangal Dam lies on the border of the Punjab and Himachal Pradesh. It is situated on the Satluj River near the border between the two northern Indian states. एतिकु रिलेट करि परिबो. Next चलो. The Subarna Rekha River originates from which of the following location? Subarna Rekha जे कि आपनकर border share करूछि between the West Bengal and the Odisha. Then हमें कहि परिबा the Subarna Rekha River originates from which of the following stations? Kwa Rajmal Hill na Nagari Hill Moikal Hill Sihaba Hill तमन को eliminate करि करि जिबि जो तमारे कोन yes that is from the कोठु टिकेरो yes that is from the Nagari कोडे गला Chotnagpur Plateau Nagari village आपनकर आसी जिवो clear next चलो मते को what is the name of the reservoir created by the Tungabhadra dam अच्छा Tungabhadra dam आपनकर गोटे reservoir create करिछि हैला तो मते को what is the name of the reservoir Hirakud reservoir Nagarjun Sagar reservoir Pampa Sagar reservoir or the Stanley reservoir quick option C कहा को चूज करछा Pampa को लागू हाउ so the Tungabhadra Tunga Pampa सबु गंगा रे कथा माने तो मते को Tungabhadra dam is also known as the Pampa Sagar dam and creates the Pampa Sagar reservoir across the Tungabhadra river in the Karnataka region clear next मते को the river कौन कहला the river originating from Gonasika hill eventually drains into which water body the river originating from the Gonasika hill कहला माने कोन बुझुचो ना one and only कहा विषय रे कहूची एठी ना बैतरणी रिवर कथा कहूची मने पके पारुचो that means केउझर कथा कहि देला बैतरणी रिवर एठी कहा कथा कहिला ओडिसा रे रिवर कथा कहि देला बैतरणी and बैतरणी कहले त माने रिलेट करिवो कहा को ना during the region of the केउझर तो ये आपनकर ओपन अप के हेछि कहा सहित ओपन अप का सहित हेछि ना बीओबी सहित हेछि बे ऑफ बेंगल सहित हेछि नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड राइट नेक्स्ट चलो आपनकर उकाई डैम इज आल्सो नोन बाय व्हिच अदर नेम क्विक उकाई डैम इज नोन एज बाय व्हिच अदर नेम दैट इज द बल्लभ सागर राणा प्रताप सागर गोविंद सागर और भवानी सागर को सागर रे को सागर क्विक को सागर बोले हमें जानि छे उकाई डैम को द उकाई डैम इज आल्सो नोन एज बाय व्हिच अदर नेम समस्त आंसर को दोचो ए दोचो बी भी दोचो एंड गायत्री देछि डी माने डी बिल्कुल हबनी गायत्री डी देछि माने डी बिल्कुल हबनी गायत्री मु कोन कहि कि तुम गाली देबी मु जानि पारेनी सथारे तो द उकाई डैम इज आल्सो नोन एज व्हाट ना बल्लभ सागर बोली हमें ताकू कहूचे को सागर राणा प्रताप आसिले ये आसिले की आसिले श्रीकांत तोपो आसी की तोपो भले आंसर देलेनी राणा प्रताप को से चूज करलेनी मन इच्छा मतलब माने किछि भी आंसर दबो ना के आसा नेक्स्ट मते को अच्छा अगेन आसी गला ओके जस्ट फॉर योर नॉलेज एबे त मु कहिली जो माने लेटर ऑन ऐड हेचो क्लास रे तमान को भी कहूची महापैक रे प्राइस 3499 बट वैलिडिटी होची 1.5 ईयर आपण माने जदी एक 10 और एसा 10 यूज करूछंती देन you can also get a 10% discount over the raw price okay and एटा आपनकर नंबर होइला आपण माने एटा को कॉल करी के क्वेरी सॉल्व करि पारे okay you are already in the class okay the प्रभा 2.0 आपण जदी स्पेसिफिक बैच नउचंती CGL हैला जेंदी PEO हैला या फिर TGT रो किछि स्पेसिफिक बैच ताला आपण माने स्पेसिफिकली भी किनि का परचेज करि पारे हैला क्लास काई तमे कोन डिनर धरि के मो पे आसीबो ए आंसर टिके दियो श्रीकांत तुम डिनर धरि के पे आसीबो एते चाओर सहित पचारुच आसा सो मते को द बैतरणी रिवर begins from a unique cave drop in which of the following hills को hills ना one and only कहिति दिए बे गोनासिका हिल राइट नेक्स्ट मते को which river is known to originate from inside a cave dropping like a spring at its source what will be the right answer पाठ पढ़ी के आंसर देले सब ठीक ही हबो राइट लिसु
आज क्लास पूरा जल्दी आसछ ना कि पूरा 15 मिनिट जल्दी आसछ तमे पाद धुळे टिके दियो समस्त को तमठु ही पिला माने इंस्पायर हेबे Which river is known to originate from inside a cave dropping like a spring and its source Subarnarekha Kaveri Baitarani or Chambal कौन हो आंसर वेरी गुड चलो एटार आंसर आपनकर बैतरणी ही ओके त जेते बेले भी आपनकर केव कथा कहिला माने ओनली बैतरणी नेक्स्ट सॉरी द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच टू रिवर ओई पंडित माने टिके आंसर दियो यार मते कुह ब्राह्मणी रिवर आपनकर ओरिजिन हेछि बाय कन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच टू रिवर माने दीटा रिवर मिसे के आपनकर राउरकेलाटी वेदव्यास के आपनकर एकाठी समस्त जानिचो ताको हमें कोन कहउचे ना शंख एंड कोइन हैला शंख एंड कोइन नेक्स्ट मते कहिबो The Bansodhara river originates from which of the following hill range? Bansodhara आपनकर कोउठ आसीबो Bansodhara कहिला माने कहा सहित ना आंध्र प्रदेश रो एंड ओडिसा रे जदी को बॉर्डर शेयर करछि सेटा होछि Bansodhara river जदी आंध्र प्रदेश ओडिसा कहिला माने हमें त एपट को जाई परिबानी हमें को पाखु जिबा ना सेई गजपति गंजाम से पाखे रहिबा ताहाले को आंसर आसीबो नगरी हिल कोड आसीला गोनासिका हेलानी नांडी हेलानी रहिला तो गोटी एलिमिनेशन प्रोसेस रे भी जदी जीव ना ताहाले भी तमाने आंसर करि पारे चलो नेक्स्ट so which of the following rivers begin as a cave stream drop जल्दी which of the following rivers begins as a cave stream drop एटा बार बार आसी गला बोधे रिपीट हे गला छाडी दियो नेक्स्ट which river source is associated with the tribal dominated Niyamagiri region एटे कहला Niyamagiri region सहित जल्दी आसो बाघ आज क्लास रे आसी की शिकार पछरे पड़छि बुझिया तम कथा मते कुओ which river source is associated with the tribal dominated Niyamagiri region बैतरणी जेते बेले नियमगिरी कथा कहिला बैतरणी तमान जानजो गोनासिका ओरिजिन किए हिदिला वंशधरा टिके बुलेई की पकेछि राइट सो याको हमें कोन कहिबा ना वन एंड ओनली वंशधरा सो दैट तमे माने जानो कि को टाइप रे भी क्वेश्चन जदी मॉडिफाई करी पचारला तमे माने हार्ड मानिबोनी सबुरा आंसर द हने आसा द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द Sankha and South Coil rivers where the Brahmani river takes shape is located at एठी पचाला केमिति ना सेई जागार ना जोडा राउरकेला रे अछि आपनकर कोन होउची ना वेदव्यास हन नै एमिति ही आंसर पकेइबो हैला माने क्वेश्चन पकेइबो नेक्स्ट आसा सो द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द confluence of the Sankha and South Coil river at the place called Vedavas which is near the city of the Raurkela in the Sundargarh district of Odisha एति के मन रहइबो आपनकर टोटल लेंथ एवरीथिंग गाइस एति आपनकर मेंशन हे जाय नेक्स्ट मते कहिबो which dam is one of the oldest large scale multi-purpose river valley projects in South India east west north south तळु पळे आस हो एबे मते कुओ which dam is the oldest largest dam आमे कंसीडर करू छे कोन ओटे महाभारत चललानी परिडा वेदव्यास अच्छा हो द मिट्टू डैम रिहान डैम सदा सरोवर डैम और द तेहरी डैम कोन कहू छे कहा को कहू छे वेरी गुड कहा को हमें केमिति मन रखिबा हमें को मन केमिति रखिबा मते कुओ मन केमिति रखिबा द मेटूर डैम आपनकर तो राइट आंसर हबो सरदार हेकी चिल्लाओनी हैला द मेटूर डैम बिल्ड इन द 1934 इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लार्ज स्केल मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इन द साउथ इंडिया बोली हमें ताको कंसीडर करू छे यस मीटर बोली कहइबो जेमिति कि आपण माने रिलेट करि परिबे कि एबे एबे आपनकर मेट्रो प्रोजेक्ट चली छी बट मीटर आपनकर बहुत पूर्वरु थिला मेट्रो इज द एडवांस वर्जन बट मीटर इज द प्रीवियस वन हैला मल्टीपल रिवीजन हां ये से कहू छ आगु जिबा को हां आसो तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच मेजर रिवर कोन हबो मते को The Tungabhadra dam is constructed on the tributary of which major river? नर्मदा कृष्णा महानदी को छाड़ एलिमिनेट तो मानक पई करि भी देनी हैला राइट आंसर कोन हबा कावेरी को भी एलिमिनेट करि देनी दीटा आंसर छाडी दे को ऑप्शन दीटा छाडीले आंसर गोटे को राइट आंसर विल बी योर कोन ना वन एंड ओनली तुंगभद्रा रिवर आपनकर कोठी ना कृष्णा रिवर सहित दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट ना कृष्णा रिवर बफरिंग होउची किछि बफरिंग होउनी मुंडरे बफरिंग होउची ता छडा किछि होउनी
So mate kuha, the Tungabhadra Dam is constructed across the Tungabhadra River, which is a major right bank tributary of the Krishna River. Hela chalo कृष्णଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ସିମିଲାର ଶୁଭୁଛି ତ ଭାବି ଦିଅ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ସରଲା କଥା कृष्णଙ୍କର ଭଉଣୀ ପାଖକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦବ नेक्स्ट मते को which river originates closest to the Odisha Jharkhand border region among the following that is the Vansadhara Brahmani Baittarani Godavari कौन होगा राइट आंसर क्विक which river originates closest to the Odisha Jharkhand border region among the following what will be your right answer हाँ हाँ निहाती दीपक राहुल गुंडी पके के आसुचे हो राइट आंसर कोन ओडिशा एंड झारखंड कथा कहला जते बेले ओडिशा एंड झारखंड बैतरणी किए से मानला काहेकी बैतरणी एठी हबो त माने करा काहेकी बैतरणी ब्राह्मणी तो मेजर आपनकर रहिला बैतरणी कोथि पे आपन माने कहबे बैतरणी त आपनकर ओरिजिन हेची कोठू ओरिजिन प्लेस ता को सब बेले बाहरु नब नॉट कि ओडिसा रु बाहर की का सते शेयर करिछि मन इच्छा गप्प ना कि आसा which of the following rivers is often referred to as the Ganga of the Ganjam अच्छा गंजाम रो गंगा बोली हमें को नदी को रेफर करूचे ताले गंजाम रे आपनकर अछि को नदी ब्राह्मणी त नाही बैतरणी नाही ए दिटा भीतर गोटे को चूज करिवा रहिबो किए वन एंड ओनली ऋषिकुल्या चलो नेक्स्ट मते कहिबा which of the following rivers does not originate in the eastern ghat रो आपनकर origin हेई नाही okay that does not originate from the eastern ghat what will be the right answer बंशधरा ऋषिकुल्या नर्मदा और बैतरणी कौन हबो कहि दिला टिके which of the following river does not originate in the eastern ghat quick हां बंशधरा हेले आपण माने जानि संती ऋषिकुल्या हेला बैतरणी हेला बट नर्मदा आपनकर वेस्ट फ्लोइंग रिवर का सता नर्मदा सहित तापी कहि दिली तो एलिमिनेट काहा को कर देला एठी क्लियर नेक्स्ट ओके द ईस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर लिस्ट भी तमाने को देई देछि तमाने देखि भी परिबो ईस्टर्न घाट रो कोडा ओरिजिन हेछि वेस्टर्न घाट रो आपनकर कोन ओरिजिन हेछि कोन हिल्स मेनली को हिल्स अछि हैला नेक्स्ट वो देखो द नागार्जुन सागर डैम कहां पर कृष्णा नदी ऊपर तो कौन पचारछि ना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इरिगेशन इन द को इरिगेशन रेट आपनकर हेल्प करूछि को रीजन रे हेल्प करूछि मते कुहा करमंडल कोस्ट करमंडल माने पड़ला करमंडल अच्छा सॉरी दैट अ डिफरेंट स्टोरी लेट इट करमंडल कोस्ट डिकान प्लेट्यू वेस्टर्न घाट और द थर्ड डेजर्ट कौन होबा जल्दी कौन होबा राइट आंसर जल्दी कुह ऑप्शन बी डिकान प्लेट्यू पक्का चलो सो द गायत्री किंतु अलगा काउंट मारिथिबो से जेमति वर्षा आसिले गायत्री रो सेकंड वर्सन वर्षा आसिले गायत्री रो सेकंड वर्सन वर्षा भी गायत्री को फॉलो करचंती गायत्री जहा मारिबो सेटा होची भूल एटा समस्त मु एटा आज कहूची आज रो ब्रेकिंग न्यूज जोटा तम माने मारुचो गायत्री जोटा मारिथिबो सेटा तम माने बिल्कुल मारिबोनी सेटा जबरदस्त भूल हबो ताको छाडी की जोटा मारिबो सेटा ठीक हो हैला आसो so the Nagarjuna Sagar Dam contributes the significant irrigation in the Deccan Plateau. It provides water for over 10 lakh acres of farmland in the state of Telangana and Andhra Pradesh, which are part of the Deccan Plateau region. Next. मते को द ऋषिकुल्या रिवर originates from which hill region in Odisha? एबे कहितिली जस्ट एबेटा को हम डिस्कस करिथिले तो ऋषिकुल्या रिवर आपनकर origin होउची को हिल रेंज रो जल्दी गायत्री कोडे वाला रागी गायत्री क्लास स्टडी पळेला गायत्री यू देयर बच्ची मजा करूची रे अबे जस्ट किडिंग अच्छा अच्छी से अच्छी oh the Rusikulia river originates from Niyamagiri hill no Daringbadi hill अरे वाह हो तो राइट आंसर कोन ना Rusikulia river originate होची कंधमाल रो दैट मींस आपनकर दारिंगबाडी सहित कंधमाल दारिंगबाडी त माने जानि छ तो आपनकर कोरापुट देवमाली बोली जानि छ तो ना कंफ्यूज हो छ मो बलिया आसा सो
The Rusicula River originates from the Daringbadi hill in the eastern Ghat region of Odisha. It is also known as the Kashmir of Odisha. Hela? Aso. Next mate ko which reservoir is formed by the Bhakra Dam? Are ba. Mate ko Bhakra Dam. Bhakra Dam so mate ko. Which reserve? Mate ko which reservoir is formed by the Bhakra Nangal Dam? Okay. Right answer कौन हीराकुद रिजर्वयर तो नुह गोविंद सागर भाकरा कथा कहि रे आपनकर रिहान रिजर्वयर ना देन के रहला उकाई रिजर्वयर हे भगवान गायत्री कोन मानलानी गायत्री कोन गोविंद सागर आज मार देछि कोन आज सूर्य काली के उदय हेबेनी देख हम कहि दो जे सूर्य काली की बंद रहबे त माने से अनुसार लुगा फुआ कोड सुखिया भाबी दियो मैम टिके बाहर ब्रेक नउछि so the reservoir formed by the Bhakra Dam on the Satluj River in the Himachal Pradesh, India is known as the Gobind Sagar Reservoir or the Gobind Sagar Lake. It was named in the honor of the Guru Gobind Singh. है ना? चलो, अरे वाह 100 पिला जी present रही हो वाह कौन हो ना? चलो like भी टिके 100 टा हो. Next मत कौन the Rusicula River originates in which district of Odisha? Rusicula River origin हेची कोटी कहली जदि हिल कहूची दारिंगबाड़ी ता माने को डिस्ट्रिक्ट वन एंड ओनली कंधमाल दारिंगबाड़ी जदि कहली कंधमाल सहित रिलेट करिवो हन नै मते को नेक्स्ट सॉरी डी के से गायत्री ना रे हो आसा सो नेक्स्ट मते को दारिंगबाड़ी द ओरिजिन ऑफ द Rusicula is popularly known as what of Odisha जल्दी देखो जो रिपीटेड क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन मु चाहुनी त माने किछि टाइम नै कि सेटा को आंसर दियो without any second thought I just need the right answer from you quick आज नाही मौसमी हो तो कश्मीर ऑफ ओडिशा नेक्स्ट मते कहइबो in terms of water storage capacity which dam forms the largest reservoir in India quick in terms of water storage capacity मैम प्रीवियस क्वेश्चन बुझी हलानी प्रीवियस क्वेश्चन अछि कोन दारिंगबाड़ी को ओडिसा रा कोन बोली हमें कहूचे कश्मीर ऑफ ओडिशा बोली कहूचे आउ कोनटा बुझी परलनी द Rusicula River originate in the which district कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आउ कोनटा बुझेबी आउ पछकु जिबी ओ लास्ट टिक रहिबो मते पडा नंबर कहइबो मु नंबर अनुसार जिबी नंबरटा नोट कर दे को क्वेश्चन ता मते को इन टर्म्स ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी व्हिच डैम फॉर्म्स द लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन इंडिया क्विक सरदार सरोवर डैम अरे वाह बढ़िया आंसर दोछ हो तो इंदिरा सागर डैम के सरदार सरोवर गुटू पावर थिले आपनकर के ना इंदिरा मैडम द आयरन लेडी ऑफ इंडिया हमें ताम कंसीडर करू छी हैला so the Indira Sagar dam forms the largest reservoir in India in terms of water storage capacity with a total capacity आपनकर 12.22 आपनकर billion cubic meter located in the कोठी ना आपनकर खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश क्लियर जिबा नर्मदा रिवर ऊपर ही आपनकर दीटा जाक इंदिरा एंड आपनकर सरदार दीटा आपनकर नर्मदा रिवर ऊपर ही अछि Clear? Chalo next. Which lake is known as the jewel in the crown of Kashmir? जल्दी कहिलो. को lake को हमें कहूचे that is the which lake is known as the jewel in the crown of Kashmir? उल्लार. Option A उल्लार. अच्छा उल्लार lake को हमें आउ कौन बोली जानचे? डाल lake गायत्री असली डाल मार दो. गायत्री पर भरोसा नहीं. गायत्री तुमको गोटे रेंची दरकार की गायत्री तुमको गोटे रेंची दरकार देख बट गायत्री जदी डाल मारिबा सेटा ठीक हेबा कथा तमानु कहिथिली गायत्री संगे जाओनी गायत्री ए मारिथला तमे के ए मारलो कोदी पई को किछि भी तम माने यार देखो डाल रो मने रखो डाल रो कलर भी येलो ज्वेलरी रे कलर भी येलो ही थाई तो डाल लेक को अपन माने कंसीडर करिवे दैट इज द ज्वेल ऑफ इंडिया बोली हमें कहूचे द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर एंड द श्रीनगर ज्वेल ड्यू टू इट्स कोन द इमेंस ब्यूटी द कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इट्स इंटीग्रल रोल इन द रीजन्स ऑफ द टूरिज्म एंड द रिक्रिएशन क्लियर आउ डाल रो कलर येलो आउ तमरे कोन अछि पिंक आउ मो जाबडा बाजिले गालो हे जे पूरा लाल दरकार का गो हां सोनल दरकार का गो Asa, which lake contributes significantly to flood control in the Kashmir Valley? What have right answer? Quick. Which lake contributes significantly to flood control in the Kashmir Valley? Kashmir Valley कथा पचारिछि मते कुह
बाघ रिजॉइन हे जाओ Dam Lake, Ulla Lake, Pongong Lake or the Sommariri. कौन हमारा right answer? Quick. Sir समझते B final Ulla. एटा ठीक है. So Ulla Lake contributes significantly to the flood control in the Kashmir Valley by acting as a huge absorption basin or the excess flood waters from the Jhelum River, regulating the region's water regime. Okay. माड़ खाइबा गुण से करिवो से तो माड़ खाइबो आसा Dal Lake is especially famous for which of the following अरे बा मते को फ्लोटिंग विलेज पाई फ्लोटिंग आइलैंड आमे लोकटक आइलैंड मणिपुर को रिलेट करछ ह ना नहीं छाडी दियो ताको कोरल आइलैंड आमे ताको करछ कि अंडमान को रिलेट करछ छाडी दियो हाउस बोट्स एंड द सिंकर्स और द वाटरफॉल्स रहिला कोटा मते को रहिला कोटा अरे वाह very good option C that is the houseboats and the sinkers are the iconic and the most famous features of the Dal Lake like this way जिबा को चाहू कि कश्मीर जिबा को चाहू कि कश्मीर देन चलो आम सहित बुक हे जाओ next मते को Pulicat Lake lies between which two Indian state quick the Pulicat Lake lies in between मते को the Pulicat Lake lies between which two Indian state कौन हवा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु देखिए गायत्री कौन आंसर देछि हे गायत्री भी आंसर बी देछि the Pulicat Lake is located between Andhra Pradesh and the Tamil Nadu it is a brackish water lagoon on the southern east coast कौन Pulicat Lake को हमें कहउछे this is also a brackish water lagoon like our कौन Chilika yes or no so the with the majority of the lake in the Andhra Pradesh and southern part in Tamil Nadu जदि आपन को इन केस पचारि देला आपन Pulicat Lake रा मेजॉरिटी पार्ट कोठी अछि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और व्हाटएवर महाराष्ट्र और ता पाखरे हिमाचल किछि भी आपन को ऑप्शन देई देला व्हाटएवर राइट आंसर कोन मेजॉरिटी पोर्शन आपन कोठी ना आंध्र प्रदेश सहित अछि माइनर पोर्शन तमिलनाडु क्विक चलो तो चिलिका लेक इज ग्लोबली नोन फॉर होस्टिंग व्हिच माइग्रेटरी बर्ड अरे वाह को मते फसिलो ना कि फसिलो बुझे आंसर देला मु देखे फसिलो ना अच्छा साइबेरियन क्रेन बार हेडेड ग्रूस तमन को पई दीटा मु एलिमिनेट करि देली देखो आंसर किए कोन देइसी देखे गायत्री रा आंसर टिके आगे चेक कर दी गायत्री कोडे रेंची देले मु ता नाटक आउटे भलो देखि परिबे तो राइट आंसर आपन कोन एठी आसिला ऑप्शन ए अरे वाह हो आसो द चिलिका लेक आमे ता कोन कहूचे ना द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोली आमे कहूचे दैट इज फॉर द फ्लेमिंगो पई कोथि पई ना फ्लेमिंगो पई हां तमन को एमिति ऑप्शन ही मु देई कि दीटा एलिमिनेट कर देबी तमन कहतो हां मैडम केते भलो हम भलो भाबी कि त से पूरा बढ़िया आंसर देछन एमती करबी हां एई मोए हबो आसो नेक्स्ट मते कहिबो which lake is located close to the Satish Dhawan Space Center तो Satish Dhawan Space Center रो क्लोज अछि को लेक आपनकर कहिला देखि को लेक आपनकर Satish Dhawan Space Center तो पूरा पाखरे अछि जल्दी फ्लेमिंगो एंड्रे हेबा हां कि बाखो हो बी सहित एटा कोन बी फाइनल हो चलो सो सतीश धावन पाखरे आपनकर की अछि ना आपनकर पुलिकैट लेक अछि हैना नेक्स्ट आसा द हीराकुड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड प्राइमरी फॉर हीराकुड डैम जे कोन से डैम आपनकर कंस्ट्रक्ट हेजी मो नेम ता एते फेमस तम नाटा कोन ताले हुआ मते को हीराकुड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली फॉर जे कोन से डैम आपनकर प्राइमरली तयारी होय कोथि पय फिशिंग एंड टूरिज्म पय तो तयारी हेई नथिबो flood control can be a reason or the hydropower generation only that can be a reason but here the flood control ta the irrigation add hi jeji to option C सहित जीवो that is the most appropriate one option B कोन पय रे पंडित दल option B किए देजी सब option B किए सब देइछो माने कहिला परे भी सुजाता हुरी option B दोउची कोथि पई हां चलो next which river's origin lies closest geographically to the Rusiculias origin
ऋषिकुलार ओरिजिन सहित क्लोजली अछि कहले टिके जल्दी माने ऋषिकुला पाखरे की अछि तार भौणी कहले चलिबो हो ना को मते देखो वंशधारा बिल्कुल हेई पारे के मना कला हेई भी पारे बुढ़ा बळंग एटा बिल्कुल हबनी सुवर्ण रेखा ना तो कोडा कोडा तमन पई छाड़ीबी कोडा को मते सॉरी देखो सो ऋषिकुल्या कौन कहिची ना ऋषिकुल्या पाखरे आपनकर वंशधारा के रहिला ना वन एंड ओनली वंशधारा so the river whose origin is closest to the Rusikula is the Vansadhara. Both rivers originate in the eastern ghat of the Odisha with the Rusikula rising the Daringbadi hill and the Vansadhara rising the Kalahandi district. Yes, next chalo. हाँ चलो Which lake is famous for floating vegetation known as fumids? तो मते कोई जो fumids पाई fumids और fumids की चिल कर तो को मते fumids पाई हमें कौन कहूचे very good लोकटक लेक आपनकर कोठी प्रेजेंट अछि लोकटक लेक आपनकर प्रेजेंट कोठी ना आपनकर मणिपुर रे हैला दिस इज द लोकटक लेक हमें ता कहूचे फ्लोटिंग कंडीशन रे रुहंती जोति आपनकर कोन वेजिटेशन भी होउचे so the loktak lake is famous for the floating vegetation that is known as the fumids. It is the largest freshwater lake in the northeast India and is located in the Manipur state. Next, which of the following rivers directly influences the hydrology of the Koleru lake? कौन हमारा राइट आंसर टी कहिलो कोटी राइट आंसर कौन हबो which of the following rivers directly influences the hydrology of the Koleru lake? Koleru lake सहित आपण माने रिलेट काहा को करिवे ना ना वन ऑलरेडी गोदावरी की हबो ना Koleru lake is the natural flood balancing reservoir situated between the deltas of the Godavari and the Krishna rivers. While it does not receive water directly from the main channels of these major rivers. Clear? मु आंसर देबिनी मो मेसेज मैम देखु नाहांती तम मेसेज समस्त देखा जाउची मु भी देखुची माने तम नाटा धरिले तम जानिबा मु तो मोर मेसेज पढुची बोली कॉमन यार अमित आसो which dam plays a major role in supplying water to western Gujarat and Rajasthan मते को which dam quick which dam plays a major role in supplying water to western Gujarat and Rajasthan total western Gujarat and Rajasthan को water supply करूची हीराकुद तो बिल्कुल नुह सरदार सरोवर तुंगभद्रा and रिहान कोटा हे परि मते कहलो that is सरदार सरोवर obviously गुजरात and राजस्थान को आपनकर सरदार जी गुजरात कहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो ना तो ताको आपण माने सरदार को पाखु पठे क्लियर चलो नेक्स्ट मते को which of the following is the largest inland salt lake in India कोन हबो कहलो largest inland salt lake in India quick salt lake कहिची जल्दी पुलिकैट ना ना संबर लेक अच्छा संबर लेक अच्छी कोठी मते कहला टिके पंडित तला मते टिके कहि दियो संबर लेक कोठी अच्छी राजस्थान रे अच्छा काहे की कारण सॉल्टी लेक बोली अच्छा जहाओ किछि किछि रिलेट करके आंसर दोचा okay so the Sambal lake located in the Rajasthan is the largest inland salt lake that is the saline wetland ame kahuche that is in India it is an endorheic basin meaning it is a landlocked and has no outflow to the sea okay this is a closed lake jara kaha से attached नहीं ना sea ocean सहित किछि attachment ही नाही हैला ना कि आपनकर गल्फ ऑफ मैनर सहित भी किछि attachment अछि कच्छ सहित भी नाही हैला तो अगेन कहि दोची 3499 अपन होची बैच रो प्राइस कहारो महापैक रो प्राइस लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर साउथ इंडिया रे थिला बोली साउथ इंडिया रे थिला या फिर सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर एमती किछि थिला ना which is a brackish water lake एमती किछि थिला जोटा भी थिला पीडीएफ पठे देबी सेटा जानि दबो हैला ना ना क्लास सॉरी नी हिमांचल बाबू क्लास सॉरी नी एटा त माने को मझरे टिके ब्रेक देली त माने टिके चिट चैट करिवो बोली गुड नाइट की से लिखिला गुड नाइट काहेंगी सॉरी नी क्लास
मु तुम कहूँ कि 3499 नौची महापैक प्राइस यदि नेबा को चाहूछ ताले नहीं जा एति कहू कहू भी तुम क्लास सरी गला कि अद्भुत पिला सब आस मते को पंगोंग सो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हिच टाइप ऑफ लेक तो पंगोंग सो को हमें को लेक बोली डिस्क्राइब करिछे मते को यस एटा आर्ट टाइम राइट मधुस्मिता मणिपुरटा कोठी कलिकता पाखरे हैला एंड कलिकताटा कोठी कान तले गोटे बसिला परे कलिकता कथा मने पड़ियो एटा सोनल पई तम मानक पई न मैम सीजीएल पाई मते डिस्काउंट मिलिबो कि नहीं हां निहाती मिलिबो एके 10 यूज करो ऐसा 10 यूज करो यू कैन गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट को the fungong soap is best described as which type of lake fresh water brackish water सब आंसर दिचो कोन सी कोन आंसर दे दिचो सबरे सी देखिलो ना जनकर आंसर मु देखि लास्ट को जनकर आंसर मु देखि सी होजंदी सीमांचल बाबू एंड डी जनकर भी देखि ताकू गाली कलिनी छाडी देली अनिता कुमारी बाना or the bana whatever Anita okay so the Pangong So is an endorheic lake जोटा कि ऑलरेडी तमाने कहिची कोठी आपनगर प्रेजेंट अछि that is a brackish water lake हमें कहूचे वर्ल्ड रो हाईएस्ट सॉल्ट वाटर जदी कहिबा कि हमें वर्ल्ड रो हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक माने हाईएस्ट अल्टीट्यूड रे कोठी अछि ताहाले that is the Pangong So ताकू रिलेट करी हैला चल मु सीजीएल क्लास फ्री रे करिबी मोर पैसा नाही हो हो तम कथा बुझुची मधुस्मिता मते कुह रिहांद डैम व्हिच फॉर्म्स द गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वोयर कौन कहिला ना रिहांद डैम व्हिच फॉर्म्स द गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वोयर इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट को स्टेट रे अछि आपनकर कहिला फाइट सॉरी फिंगर पोज मानिया बाको कोट लिखिला फिंगर समथिंग यस दैट इज इन द यूपी हैला कोठी अछि ना रिहांद डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिहांद रिवर ऑन द कोठी ना सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश रे दैट इज द रिजर्वोयर गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वोयर extends slightly into the Madhya Pradesh but the dam itself is a primarily present in the UP state next iba mate ko the Keibul Lamjau National Park the only floating national park in the world is located in the Keibul Lamjau गोटे मात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमें ताकू कहूचे कि एटे लेक कहिनी कि आपण माने लोकटक कथा मेंशन करिवे द क्वेश्चन इज नॉट डिमांडिंग अबाउट द लोकटक सेट ऑफ किरण कुमार और कोन तांगो ना किरण कुमार पंडा एटी कोन कहली लेक कथा कहिनी एटी नेशनल पार्क कथा कहिची टिके मुंडो लगाओ मुंडोटा को थुओनी हैला मुंडोटा तळे रखनी गोड़ पाखरे मुंडोटा को आनी कि ऊपर रख मुंडोर जगह ऊपर केते समाने सुनिबो केते गाली सुनिबो तम माने हां सो राइट आंसर आपन कर इटी कोन हबो ना ऑप्शन बी द केबल लैमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द लोकटक लेक इट इज द लोकटक ऑप्शन आपन कर कोठी अछि एठी ना ओके चलो हां अरे आपण मानकु तो मु लेक लिखुची आपण माने मते ऑप्शन लिखुछंती पूरा सॉरी आपण मानकु पार्क पचाची आपण माने लेक सहित रिलेट करियो तो ऑप्शन रे अछि बट त माने पूरा डायरेक्ट लिखि दोछ लोकटक लेक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मते को द Chambal lake receives water mainly from which seasonal resource quick आंसर देलो यारो Chambal lake receives water mainly from which seasonal source quick monsoon runoff ru pakka dekho so the Chambal lake located in Rajasthan in a saltwater lake that is primarily fed the seasonal rivers and the streams during the monsoon's rains next the Moriri lake is located in the Sudipta ma'am jaha lekhibe moro seya TV asa the Moriri lake is located in which union territory ko union territory re apankara Moriri lake achi mate कहला
आपणकर सो मोरिरी लेक खाली मोरिरी सहित मन रख तो सो मोरिरी लेक इज लोकेटेड इन व्हिच यूनियन टेरिटोरी मो मुह मु कमे फुलेबी भी तुमको कहबी मेसेज टा आसिला तो मेसेज टा मु भाबुथिली किछि भलो मेसेज आसिला सेमति किछि भलो मेसेज आसिला सेतले मुह फुले देली चलो राइट आंसर कौन एठी हबो सो मरीरी आपनकर आसीबो लद्दाख रे हैला तो सो मरीरी is a high altitude lake situated in the Ladakh region in the India in the कोना ना सॉरी द छंगथांग प्लेट्यू तो कहितली त माने को मरिबा को हेले हाई अल्टीट्यूड को जीवो मरिबा को हेले हाई अल्टीट्यूड को जीवो हना नै को नेक्स्ट चलो so which dam creates one of the longest artificial lakes in Asia जल्दी कहिलो को एग्जाम लागि क्लास होउची अरविंद सतपथी क्लास होउची क्लास करले सब एग्जाम दे पारिबो आसो which dam creates one of the longest artificial lakes in Asia भाकरानागल हीराकुद रिहांद और तुंगभद्रा कौन हला राइट आंसर मते कहिलो आर्टिफिशियल लेक कथा पचारि देला अरे वाह जहा हो एतर भलो रिलेट करछ हीराकुद रिजर्वोयर हैला so the Hirakud dam creates one of the largest artificial lakes in the Asia एटा कमे हीराकुद रिजर्वोयर बोली भी कहउछ नेक्स्ट मते को the Somoriri is classified as which type of lake अच्छा Somoriri जोटा आपण माने कोन मरिया को हेले हाई अल्टीट्यूड को जाउथिलो तो मते कुह Somoriri आपण को ग्रुप रे आपण ग्रुपिंग करा जाई छै वोल्केनिक लेक फ्रेश वाटर लेक ब्रैकिस लगून और द सॉल्ट वाटर लेक कौन हबो राइट आंसर क्विक फ्रेश वाटर लेक अच्छा बहुत कत देखि गलानी तो Somoriri lake in Ladakh is a salt water lake fresh water कोथि पय रे कोथि पय किछि भी कहउछ माने एते कॉन्फिडेंटली त माने आंसर दोछ कि एग्जामिनर भी भाबिबो सेकंड थर त माने को क्रॉस चेक करिवा लागि it is not a fresh water not a volcanic not a brackish lagoon clear next the Somoriri forms part of which wildlife conservation area ये आपनकर गोटे पार्ट लाइफ कोन ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया भी बनौछि तो एरिया रे नाम कोन कहउछि दैट इज द हिमिस नेशनल पार्क द चंगतांग अरे वाह सो ना सो रख देखिला परे भी जानि दउछो सो देखिला परे जानि दउछो चंगतांग बोली आ हां the Somoriri is a part of the Changtang wildlife sanctuary the area around the lake is also protected as the कोन the Somoriri wetland conservation reserve हैला क्लियर ए हे भूल हे गला रे कोन सोनल कहूची निजे तो ब्रेनलेस ता से कौन कहबो से पूरा ब्रेनलेस ता आसा थैंक यू सो मच गाइस इट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड जो माने क्लास रे पीडीएफ पाइबा को चाहू जंती जो माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना हंदी डू सब्सक्राइब फास्ट एंड जो माने पीडीएफ पाइबा को चाहू जो टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके जॉइन हे जाओ ओके तो पीडीएफ पाइ भी जीवो and also माने मो सहित कनेक्टेड हेबा को चाहू जो you can guys follow me over the Sudipta zk network over Instagram जो मानकर नाही से मानकर नाही खुशी रा कथा मानकर नाही से माने खुशी रा कथा हैला थैंक यू सो मच क्लास प्रोवाइड करि देबी सब देखि एई केते जण अछन मु गाली खाइले ताको मजा लागे ओ तो देयर इज एन अनाउंसमेंट आपनकर काली मोर क्लास रहिबोनी डायरेक्ट मंडे टू मोर क्लास रहिबो तबे 3 डेज मोर क्लास ऑफ रहिबो 3 डेज की काली टू 4 डेज तो 4 डेज क्लास ऑफ रहिबो से भीतर सब थिबो के कोडे हजि जीवनी पुनी सोमवार टू क्लास कंटिन्यू हो हैला ओके थैंक यू so much
मु काली कॉल करी हां कॉल करी थैंक यू सो मच हैव ए हाँ पायल दो थी Thank you so much. Have a good night. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This should be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. रविंद्र शतपथी मैम गोटे क्वेश्चन जो जीके क्वेश्चंस माने मने रहुनी ता पई कोन करिवु को पड़िबो ता पई पढिया को पड़िबो बार बार ताको रिवीजन करिया को पड़िबो जो क्वेश्चन जोडा आपण भाबुसंती इजी ताको ग्रांटेड न नै कि ताको पुनी ताको को ट्रिक रे मने रखिए सेटा को आपण मानु करिया को पड़िबो देखो जीके रे पिला माने काहे की मार्क उठै पारंदिनी जदियो आपण मान जानि संती गोटे थर पढिले एटा मन रहबा जिंस मैथ रो कैलकुलेस पाठ तो आपण माने वन सेटा को कैलकुलेट करले रिजल्ट बाहरिलानी आंसर मैच कलानी देन तमे मानकर सेटा सेतिकी टाइम वेस्ट हे गल whereas in the case of जीके आपण माने थरे पढिले सेटा टोटल मन रहबनी माने टोटल मन रहबा आपनकर मन नै मते कोन काहे की क्लास हबनी कोन हम टिके घर को जिबे ये घर को जीवी 4 दिन छुट्टी टिके प्रॉब्लम अछि हैला आ माने हॉलिडे टिके हैला खाओ अमृत भंडा खाओ मु तो मते तो छोटो बेले मो मामा कुआए बैगण मु जमा बैगण खाएनी मते से डरे की कुए की बैगण खा तोर मैथ होनी हबो मु बैगण खाइली तो माने जदी भाबु जो अमृत भंडा एमिति रे अमृत भंडा देह पई बहुत भल हैला हां समस्त के पई बोरा धरि के आसीबी 20 टका हैला सब आसी खाइबो बेसी गोटे गपुच चलो बाय बाय टेक केयर एंड गीत गीत मन पड़नी किसी मूड भी नहीं बहुत सारा काम अच्छी बैग पैक करियर मत अच्छी छाड़ दिया टिके चलो बाय बाय गुड नाइट लव यू ऑल डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ओके बाय